Shabi and Shakil. Okay. Shabi, have you attempted the questions? No. Okay. Sorry, okay. So we'll start with question number 1. Okay, the author of the passage would most likely agree with which of the following statements. ठीक है, अब ये mercury के बारे में passage था. It was about कि किस तरीके से mercury environment में expose होता है and how is it transformed into fish and then ultimately into humans. ठीक है, ये तो जिसने passage पढ़ा उसको पता होगी बात. ठीक है, mercury वाला क्या? Okay, जिसने जो किया वो कर ले. ठीक है. Shabir, you said the answer is C. Yes, it is C. So correct answer इसका C है. ठीक है. शकील, आपने जब पैसेज पढ़ा हुआ है तो आप ये आंसर चेक करो, रीड करो. डू यू गेट व्हाई इज इट सी? हम एक्सप्लेन करो. लाइब आपने भी क्या हुआ है, सो आप भी पढ़ लो. यस, इट इज सी. ठीक है. यस, यू सेड सी. मैं सॉरी शबीर, आपको बोल रही हूँ, रीड इट इफ यू कैन अंडरस्टैंड कि सी क्यों है. ओके सो देखो, जुवेरिया, इनको ना पैसेज से पहले 5 मिनट दे दो. एक दफा ये दूसरे बच्चे भी गो थ्रू कर लें सिर्फ पैसेज को, ताकि इनको क्वेश्चन ठीक है, की ठीक थोड़ी है, सी ठीक हाउ. है. हाँ, इनको 5 मिनट दे दो ठीक ताकि है, ठीक है. क्वेश्चन एक दफा पैसेज को गो थ्रू कर लें. Okay, guys, I'm going to give you, and this is the last time I'm doing this. Next time I won't do this. Okay. You guys can go through the passages and then passage 1 read कर लो mercury वाला, and then I'm going to start at 10:26 dot. ठीक है. 10:30 पे हम ये पैसेज दोबारा रीड स्टार्ट करेंगे. आंसर बता दिया ऑलरेडी, सी है. Is there any of you जिसको A, B और D में आंसर लग रहा है? या is anyone of you want, does anyone of you want कि मैं समझाऊं कि C आंसर क्यों है? लाइबा, संध्या, सवेरा, मारवी. Savera, Sandhya, Marvi, I've never read any message from you guys. Do you guys get why is it C? Yeah, is there any confusion? Vishal, Almira, Almira. Okay. You guys get it, right? Okay. ठीक है, समझ आ गया. Okay. So still I'm going to give a brief answer कि क्यों इसका answer C है. It's C because ऊपर बताया हुआ बिल्कुल clearly कि fish जो है it's a part of our diet and it should be consumed considering the weight and the amount of mercury that we consume. ठीक है, इसलिए इसका आंसर C है. इसका आंसर A, B और D इसलिए नहीं है because that are not perfectly aligning with what the author believes and is saying. Yes, line 40 to 41 में लिखा हुआ है, but since we are not going to do question number 2, so I'm going to skip the evidence based part. ठीक है, but if you guys want to do it कर लेना, but it's not a part of the IBA test. ठीक है, so I'm going to skip to question number 3 now. Sorry. Okay, question number 3 says, in addition to the level of mercury in a specific species of fish, people should also consider which of the following when determining a safe level of consumption. Okay, you're not going to okay, you already. I should take the next question. So I'm going to ask the answer myself to people who are not responding. Okay. Okay, the answer is A. ठीक है, it was a pretty straightforward question. ठीक है, is there anyone जिसको A के अलावा आंसर लग रहा है? ठीक है, anyone? Sony, Shalina, have you guys answered? Shakil, Fatima, Laiba Jafar, Laiba Ali, Laiba Ashraf की तो I can see messages. आप सबको समझ आ गया ये वाला? Okay, perfect. Since question number 3 was very easy, मैं इसको explain नहीं कर रही, ठीक है? And none of you have any queries, ठीक है? So I'm going to move on to question, ठीक है? As used in line number, Moise, your camera is on in case you have turned it on intentionally. Okay. As used in line 9, concentration most nearly means. Okay, so I want Maida to answer this. What do you think is the answer? Maida?
know the right answer, but we have to give it a chance. Okay, इसका आंसर डेंसिटी है, ठीक है. Is there anyone else जिसको डेंसिटी के अलावा आंसर लग रहा है? ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था. देखो इसका कंसंट्रेशन का इसमें मतलब जैसे हमने कहा सिग्निफिकेंस और स्ट्रेंथ वाला क्या था, इट्स द सेम एज दैट कि आपको कंसंट्रेशन एज इन उसकी डेप्थ होती है, डेंसिटी होती है, कितनी मिकदार में एक चीज अवेलेबल है हवा में, ठीक है. मरकरी की बात हो रही है, सो दैट्स व्हाई द आंसर इट्स सी, ठीक है. अब ये तीनों तो आसान क्वेश्चन है. वी आर गोइंग टू मूव ऑन टू थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन, ठीक है. नाउ आई वांट Laiba Ashraf to answer this question. Question number 5, sorry. The passage most strongly suggests which of the following statements is accurate. This was a particularly थोड़ा सा confusing question. Okay, 5A is the correct answer. Perfect. ठीक है. इसका since अगर किसी को याद नहीं इसकी आंसर, ठीक है, ठीक है. 5A. Is there anyone जिसको A के अलावा आंसर लगा हो? अच्छा देखो यहाँ पर again this comes most strongly, ठीक है. Okay, someone said C. अच्छा C ऊपर वाले क्वेश्चन का था, ठीक है. किसी को कोई और आंसर लग रहा है इसका? एनीवन एल्स जिसको लग रहा है नहीं, एक गलत आंसर है, कुछ और होना चाहिए? फातिमा रेन, आपको समझ आ रहा है ये? ओके, 5 में एक्सप्लेन कर दी. फातिमा, आर यू देयर? ओके, डिड यू गेट इट फातिमा? ओके, आर्यन, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन. देखो सिंस यहाँ पे emphasis on most strongly, ठीक है, मैंने कल भी एक्सप्लेन किया था, most strongly, nearly, suggest, near, best answer, ठीक है. इसमें what happens is here कि the passage most strongly suggests which of the following statement is accurate, ठीक है. तो हम लाइन में लाइन पढ़ेंगे इनको, ठीक है, BCD में से पढ़ेंगे, ठीक है. Inorganic mercury is more dangerous to humans than organic mercury. इस पैसेज में इन दो का जिक्र है, बट कहीं भी ये नहीं बताया हुआ कि दिस इज मोर डेंजरस या दिस इज मोर डेंजरस. दिस विल बी द रॉन्ग आंसर. इसको हम एलिमिनेट कर देंगे. रिमेंबर द एलिमिनेशन मेथड, इसको एलिमिनेट कर दो. सी पार्ट सेज मोस्ट ऑफ द एक्सपोजर टू मर्क्यूरी एक्सपीरियंस बाय ह्यूमंस कम्स फ्रॉम फिश कंजम्पशन. ओके, तो देखो मैंने जब ये पैसेज पढ़ा ना, फॉर अ मेयर सेकंड मेरा ध्यान इस ऑप्शन पे गया था, नॉट गोना, ठीक है. बट देन we are going to see कि यहाँ पे ऊपर बात हुई है कि मोस्ट ऑफ द एक्सपोजर टू मर्करी, जो ऊपर यहाँ पे बात हुई है, उन्होंने बात की है इधर इधर उन्होंने बात की है मोस्ट ऑफ द मर्करी comes from the environment, comes from the comes in the environment, in the environment. They're not saying most of the mercury in humans, ठीक है. They're saying most of the mercury in environment comes from the emissions of coal burning plants, etc etc, ठीक है. तो यहाँ पर वो most की जो बात आ रही है ना, वो आ रही है environment की and plus coal burning plants की. but नीचे देखो कहीं भी ये बात नहीं हुई कि इस मैक्सिमम अमाउंट से फिशेस में उसी वही मैक्सिमम अमाउंट ट्रांसफर हो रही है, राइट. वी नो कि मोस्ट ऑफ द कार्बन एमिशंस इन द एनवायरनमेंट आर फ्रॉम कोल एमिशंस, लेकिन हमें ये नहीं पता कि ह्यूमंस में वो ट्रांसलेट होकर फिश के थ्रू जा रही है नहीं, ठीक है. डू यू गाइस गेट द डिफरेंस? इसलिए जो है ना इसका आंसर आपका सी नहीं हो सकता, ठीक है. पार्ट डी सेज मर्करी इज वन ऑफ द मोस्ट अबंडेंट elements found in nature. सही है, लेकिन ऊपर फर्स्ट पैराग्राफ में it does say कि हाँ mercury is found in a lot of things, ठीक है, यहाँ पर everyday objects, लेकिन it does not say कि compared to other elements, compared to other metals वगैरह कि it is क्या is it the most abundant form या is it one of the most abundant forms. So we cannot conclude that based on the passage, ठीक है. I told you some of you might have the scientific knowledge, मुझे नहीं पता because मेरा साइंस का बैकग्राउंड नहीं है, बट मे बी इसमें से कोई ऑप्शन होगा जो आपको लगा होगा कि हाँ ये ठीक है क्योंकि आपने साइंस में पढ़ा होगा. लेकिन रिमेंबर पैसेज की बात हो रही है, हम ऑथर की व्यू को माइंड में रखते हुए चलेंगे, सही है. ओके, 6 वी आर गोइंग टू ओमिट. 7 पे हम चलते हैं, ठीक है. 7 का आंसर आई वांट विशाल टू आंसर. I know you guys have not read it, लेकिन ओके सही है. बी, ठीक है. दिस वाज कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, सो बी सी में बहुत आपको कंफ्यूजन होगी, ठीक है. इज देयर एनीवन? अच्छा ओके, देयर इज एन ऑप्शन ऑफ डी एज वेल. किसी को ए लग रहा है? ए तो नहीं हो सकता बिकॉज ऑलरेडी पैराग्राफ के स्टार्ट में बोल दिया है कि हाँ वो जो है इट्स हार्मफुल, तो वो तो नहीं हो सकता, ठीक है. ए को तो हमें परफेक्टली एलिमिनेट कर. अब हम बी सी डी में से देखेंगे. वी आर गोइंग टू गो बैक टू पैराग्राफ 3 सिंस आप लोगों ने बहुत जल्दी में पढ़ा है.
I'm going to explain a paragraph. I'm going to go back to paragraph 3 again, and I'm going to read it with you guys. Okay? Okay, paragraph 3 says, okay, the mercury deposited in the water does not instantaneously get absorbed by fish, as elementary mercury does not diffuse through cell membranes. However, methyl mercury, I hope I'm pronouncing it right. However, methyl mercury diffuses into cell easily, and certain anaerobic bacteria in the water convert the elemental mercury to methyl mercury as a byproduct of their metabolic processes. Okay? Methyl mercury released into the water by the bacteria diffuses into small single-celled organism called plankton. Small shrimp and other small animals eat the plankton and absorb the methyl mercury in the plankton during digestion. Small fish eat the shrimp and then larger fish eat the smaller fish. Each time an animal preys on another animal, the predator absorbs the methyl mercury. Okay? Because each animal excretes the methyl mercury much more slowly than it absorbs it, the methyl mercury builds up the animal over time and builds up in the animal over time and is passed on to whatever animal eats it. Okay? This paragraph, देखो बी सी और डी में आपको कंफ्यूजन होगी, ठीक है? वी गोइंग टू गो बैक टू द ऑप्शन, देन आई एम गोइंग टू, फिर मैं आप लोगों को एक और चीज बताती हूँ इसके आगे. बी से द रिलेशनशिप बिटवीन predators and prey in aquatic animals. C says how the large fish accumulate the greatest amount of mercury, and then D says the difference between methyl mercury and the. देखो D तो बिल्कुल नहीं हो सकता. उन्होंने उन्होंने बताया है मिथाइल मर्क्यूरी और मर्क्यूरी का डिफरेंस इन क्या कहते हैं डिफ्यूजन इन फिशेस. उन्होंने उन दोनों की प्रॉपर्टीज का डिफरेंस नहीं बताया. आई होप दैट्स मेकिंग सेंस. उन्होंने बताया कि फिश के अंदर वो डिफ्यूज, मतलब फिश के अंदर हाउ डू दे गो थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, सिर्फ वो बताया उन्होंने. अच्छा देखो, इवन तो ये आंसर सही है, बट द मेन पर्पस ऑफ पैराग्राफ थ्री, डू यू गाइस थिंक कि अगर मैं इसको ऑप्शन डी को मैं सेलेक्ट करती हूँ तो दैट रिप्रेजेंट्स द इंटायर टॉपिक, दैट रिप्रेजेंट्स द इंटायर स्कोप ऑफ पैराग्राफ थ्री? इट डज नॉट, राइट? इट रिप्रेजेंट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ इट. तो इसलिए जो है ना, इट्स नॉट गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर. ठीक है, अब हमारे पास बचा बी और सी. अब व्हाट वी गोइंग टू डू इज, अगर पैसेज आपने सही से पढ़ा हो, ठीक है, लाइक अभी तो आपने बहुत जल्दी पढ़ा, लेकिन अगर आपने आगे पढ़ा होता ना, तो इधर लिखा हुआ होता सॉल्यूशंस में कि, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक सेकेंड, चैट बॉक्स, या इधर इधर लिखा हुआ है कि न्यूट्रिशनिस्ट recommend that rather than eliminate fish from our diet, we try to eat more of the low mercury fish and less of the high mercury fish. Low mercury fish tend to be smaller omnivore fish, while high mercury fish tend to be the largest carnivore fish. अब अगर हमारे पास पैराग्राफ 3 नहीं होता तो हमें ये नहीं पता होता कि भाई क्यों लार्ज में जो है ना वो ज्यादा अमाउंट होती है, ठीक है? हमें ये नहीं पता होता कि स्मॉल में कम क्यों होती है. तो हेंस हमारा जो पैराग्राफ 3 है, दैट इज प्रोवाइडिंग यू विद द लिंक के क्यों स्मॉलर फिश हमें कंज्यूम करनी चाहिए, क्यों लार्जर फिश कंज्यूम नहीं करनी चाहिए. वो एक लिंक बिल्ड कर रहा है टू अ लेटर टॉपिक ऑफ द पैसेज. ठीक है, इसलिए जो है इसका आंसर सी होगा. बी इसलिए नहीं हो सकता बिकॉज बाद में कहीं भी रिलेशनशिप्स की बात नहीं हुई थी. ठीक है, डज दैट मेक सेंस? Exactly, that's what I said, just said कि relationship is not the main thing that is discussed. मतलब पूरे पैसेज में भी it's not even discussed, लेकिन ये जो स्मॉलर और लार्जर अमाउंट की बात आ रही है ना, ये हमारी आगे भी रिट्रेट हो रही है सॉल्यूशंस के पार्ट में. ठीक है, is there any confusion to anyone जिसको ये नहीं समझ आया हो? Does anyone want me to explain it again? Okay, question number 8. I want Shalina to answer this. I know ये question बहुत different and difficult है, but I just, okay, see, is there anyone जिसको who wants to answer this? Okay, see, anyone else? Shakeen said B. Okay. Anyone who thinks D? Okay, Vishal is right. The answer is D. And I know this is a very tricky question. तो इधर देखो, what you have to do is you don't have to move to the options. Say you have to read the question very carefully. Which of the following pieces of evidence would most strengthen the author's line of reasoning? What is the line of reasoning? Basically, the main idea. What is the main idea of what is the main gist of the passage? What are the main 2-3 topics? One of the main topics is कि mercury fishes में कैसे translate होकर humans में translate होता है. So ये second main idea could be एक तो humans में translation का है, ठीक है? Then the second main idea could be कि इसको हम solve कैसे कर सकते हैं, ठीक है? What should humans do? So ये तो अब यहाँ पर हमें
इन चारों में से देखना है कि ये दो में से कौन से पुट होते हैं, ठीक है। सो मोर एग्जांपल्स इन पैराग्राफ 1 ऑफ places where mercury is found. I don't think this is the right answer because I don't think इसमें किसी को confusion होनी भी चाहिए कि A आंसर होगा because already इतनी abundant examples बता दिए हैं कि you know A की तो जरूरत बिल्कुल नहीं है. B says details in paragraph 2 about the levels of mercury found in the air. अच्छा, अगर अगर ये पैसेज होता अबाउट के मर्करी कितना हार्मफुल है ह्यूमंस के लिए और मर्करी की एयर में एक्सपोजर कितना हार्मफुल है, देन भी सही होता. ऑल्दो बी सही है, ठीक है, डिटेल्स अगर होती तो बेटर होता. बट द मेन थिंग राइट हियर इज मोस्ट स्ट्रेंथन एंड द लाइन ऑफ रीजनिंग. ऑथर का मेन जो आइडिया ऑफ द पैसेज इज डज नॉट सिट राइट विद ऑप्शन नंबर बी. वाई? बिकॉज अगर हम ऑप्शन नंबर बी को मार्क करते हैं तो देन वी आर सजेस्टिंग कि द मेन लाइन ऑफ रीजनिंग, द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज इज कि मर्करी जो है ना, एयर में मर्करी जो मौजूद है वो कितना हार्मफुल है. सही है. अगर अगर इसमें इन केस यहाँ पे एयर की जगह फिश होता ना, देन दिस कुड हैव बीन द राइट आंसर बिकॉज हम इस पैसेज में मोस्टली फिश की बात करें, एयर की बात नहीं कर रहे. हेंस डी आंसर सही होगा. ठीक है. सी बोल रहे हैं एन एक्सप्लेनेशन इन पैराग्राफ 4 ऑफ हाउ टू ट्रीट मर्करी पॉइजनिंग. वी आर गोइंग टू गो बैक टू पैराग्राफ 4. 1, 2, 3 and 4. Paragraph 4 is this one. Okay. As people become aware of the bioaccumulation of mercury in fish, many reacted by eliminating seafood from their diet. However, seafood contains omega-3 fatty, blah 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 blah. Because fish and shellfish, along with some algae, are the only sources of these fatty acids. Eliminating them from our diet might consume small amounts of mercury. Okay. ठीक है. अब we're going to go back to the options. Option says कि explanation paragraph but how to treat mercury poisoning. ठीक है. mercury poisoning को हमारा main aim, the title of the passage is mercury in fish. ठीक है. Sorry, in fish. It is not कि how to treat the poison that fishes emit from mercury. ठीक है. हम यहाँ पे पॉइजनिंग ट्रीटमेंट की बात नहीं कर रहे. वी आर सोलली टॉकिंग अबाउट के फिशेस में फिशेस इज नॉट अ वर्ड, आई एम सॉरी, फिश में मर्करी कैसे ट्रांसलेट होता है एंड हाउ इट अल्टीमेटली ट्रांसलेट्स टू ह्यूमंस. ठीक है. एंड व्हाई इज दैट हार्मफुल. ठीक है. तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज नॉट द मेन लाइन ऑफ रीजन. ऑप्शन नंबर डी, हाउएवर, हमारा मेन एम क्या था पैसेज का, ह्यूमंस में कैसे ट्रांसलेट होता है एंड हाउ शुड ह्यूमंस टेक केयर ऑफ दैट. सो दिस could translate to that. इसलिए डी आंसर सही है. Does that make sense to you guys? I hope ये समझ आ रहा है सबको. Is there anyone that who cannot follow, जिसको समझ नहीं आ रहा हो? Feel free to ask. ठीक है. सबको आ रहा है? Okay. Now I want let me see. किसको मैंने अभी तक शिकार नहीं किया? I want इतने कम बच्चे हैं वैसे ही आज. Let's see. Almira. I'm sorry if I'm not pronouncing your name wrong. I want you to answer this question. Question number 9. You guys can go back and read line 40 to 41 and pair answer. Almira, you can answer. Okay, you said D. Is there anyone जिसको क्या आंसर लगता है? B. विशाल is on fire today. इसका आंसर B है. ठीक है. I'm going to explain it to you guys कि इसका आंसर B क्यों है. सही है. ठीक है. Is there anyone जिसको B और D के अलावा, okay, C भी आएगा हमारे पास. A तो नहीं लग रहा किसी को. A तो हमें पता है elimination है. ठीक है. Now we're going to go back to the passage, to this specific line. We're going to, देखो ये जो vocabulary and context के questions होते हैं ना, you solve it by trial and error. What is trial and error? ये आप लोग को मैथ्स में भी पता चलेगा. Trial and error is कि जब कोई सवाल होता है जिसको आप लॉजिकली नहीं सॉल्व कर सकते, आपको हर ऑप्शन को अपने कोई पैसेज में, अपने क्वेश्चन में पुट इन करके देखना होता है कि which makes the most sense. ठीक है. तो ऐसे हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं. Now we're going to go back. ठीक है. I want you guys to remember कि तीनों क्या थे. Specifics, points and evidence. Then we're going back to line 1441. Okay. Yeah. Okay. Low mercury, एक मिनट
सही। अच्छा, low mercury species tend to be smaller omnivorous fish, while high mercury fish tend to be the largest carnivorous fish. ठीक है, awareness of the particulars of this problem accompanied by mindful eating habits. अच्छा, अब यहाँ पर the first option that we had was specifics, it was the right answer, so we are going to come to that in the end. ठीक है, then there was particulars. ठीक है, नहीं, what was the, नहीं, particulars was the question, but evidence था, and एक और क्या था, points था, क्या था, let me go back and check. Yeah, points and evidence. ठीक है, okay, so yeah, awareness of the awareness of the points of the problem. ठीक है, अब यहाँ पे point seems like a very vague thing. अगर हम बात करते हैं कि low mercury fish, हम बात पहले करें कि humans को पता होना चाहिए कि low mercury fish जो है ना is less harmful than high mercury fish. ठीक है, अब यहाँ पर if we look into the options, तो यहाँ पर low mercury और high mercury fish की जो बात हो रही है ना, वो हमारी स्पेसिफिक बात हो रही है कि स्पेसिफिकली हम बता रहे हैं कि लो mercury fish जो है वो कंज्यूम करनी चाहिए in higher quantity than larger fish. Why? Because देखो, why is the word specifics used over here? Because ये information is not readily available. ठीक है, ये information मुझे नहीं पता थी कि अच्छा हमें ये नहीं करना चाहिए, because it is a very specific solution to this problem. It's a very specific problem कि large में problem ये होती है, small में problem ये होती है. It's not a general problem, it's a specific problem. इसलिए इसका आंसर specific होगा, इसका आंसर points नहीं होगा. ठीक है, अब हम बात करें evidence की. Awareness of the evidence of this problem accompanied by mindful eating. इस पैसेज में हमें कोई evidence नहीं दी हुई कि इस mercury को खाकर कितने humans को क्या हुआ था, क्या problem हुई थी. इस पैसेज में हमारी सिर्फ बात क्या हुई है कि इस problem की specifics की जगह कोई वर्ड यूज करो, इस problems की कोई पर्टिकुलरिटी ऑलरेडी यूज हुआ है. इस प्रॉब्लम्स की यार स्पेसिफिक के अलावा क्या वर्ड हो सकता है, अनयूजुअल बातें क्या है. ठीक है, समथिंग दैट इज नॉट रेडिली अवेलेबल. ठीक है, इसलिए इसका आंसर जो है ना स्पेसिफिक होगा. इसका आंसर हमारा पॉइंट्स नहीं होगा, एविडेंस, क्योंकि एविडेंस पैसेज प्रोवाइड नहीं की हुई. ठीक है, क्लोजिंग सेंटेंस, ओपनिंग सेंटेंस और यूजुअली द होल आइडिया ऑफ द पैसेज. ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे कहीं भी एविडेंस की बात नहीं हुई, तो वी आर नॉट गोइंग टू मार्क एविडेंस इन पॉइंट्स. ठीक है, समझ आ गया सबको? आगे बढ़ूं? ओके, ग्रेट, परफेक्ट. Last question for this passage. ठीक है, based on the information in the passage in the graphic. ना अब देखो, remember, अगर graphic लिखा है ना, कुछ बच्चे सब भूल के graphic पे चले जाते हैं. Remember, they say the passage in the graphic, you have to find दोनों का आंसर मिला के. Okay, I want Fatima to answer this. You guys can go back to the graphic and check if you want. I can wait. No, A is not the right answer. Does anyone else want to try? D. Okay. भाई विशाल थे बोल रहे हैं, विशाल सही बोल रहा है. ठीक है, डी इज द आंसर. ठीक है, अब वी गोइंग टू गो एंड चेक. अब is the screen perfectly visible या मैं थोड़ा zoom in करूँ? Is it okay, guys? Should I proceed on with the question? Okay, zoom in करूँ. Okay, wait, so sure, एक second. ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा zoom in नहीं कर रही because हमें आंसर्स को भी देखना है. ठीक है, चलो. ओके, 10 का ए सेज के फातिमा, आई आस्क्ड यू राइट, तुम आपने ही बोला था. तो ए में इट सेज कि द फिश विद द लोएस्ट एवरेज वेट इज द सेफेस्ट टू ईट. ठीक है, ये हमारी पैसेज से बात अलाइन करेगी कि यस, द स्मॉलेस्ट फिश इज द सेफेस्ट टू ईट. हाउएवर हमें पैसेज और ग्राफिक की दोनों की इंफॉर्मेशन को साथ लेके चलना है. ये पैसेज के हिसाब से इट्स राइट. देखो, पैसेज के हिसाब से इट्स राइट. वी गोइंग टू गो थ्रू द ग्राफिक्स एंड चेक कि जो सबसे लोएस्ट वेट है जिसका, एक सेकेंड, या दिस इज द वेट. सबसे लोएस्ट किसका वेट है हमारे पास? सबसे लोएस्ट इसका वेट है. Does this have the lowest mercury? It does not. इससे नीचे हमारे पास ये भी है और ये भी है, एंड इसका इससे हाई वेट है. सही है, तो दिस इज नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू द ग्राफिक. ठीक है, तो ग्राफिक के हिसाब से दिस ऑप्शन हैज फेल्ड. ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हैज फेल्ड. अ पर्सन कैन सेफली ईट मोर मार्लिन देन अल्बाकोर ट्यूना इन वन डे. ओके, मार्लिन अल्बाकोर ट्यूना को हमें कंपेयर करना है. मार्लिन इज
180,000 के हिसाब से 485 and Albert Cortina is 78. No, we can देखो इसका बहुत बड़ा significant difference है. It's more like 100 से भी ज़्यादा difference है, ठीक है? तो ये आंसर नहीं होगा सही, बिकॉज हम वी कैन क्लियरली सी कि इसमें कम है एंड इसमें ज्यादा है, सो ये हम कम कंज्यूम करेंगे, ये ज्यादा कंज्यूम करेंगे. हाउएवर द ऑप्शन सजेस्ट द ऑपोजिट, ठीक है? ऑप्शन नंबर सी भी हमारा कैंसिल हो गया. ऑप्शन नंबर सी सेज कि ईटिंग लार्ज फिश कैरीज अ लोअर रिस्क ऑफ मर्करी. और देखो ये तो वी डोंट इवन नीड टू गो टू द ग्राफिक, बिकॉज हमने ये पैसेज में पढ़ा है, ठीक है, कि ये आंसर गलत होगा क्योंकि हमने पैसेज के हिसाब से ही गलत पढ़ गया, तो ये नहीं. अब वी गोइंग टू सी आंसर नंबर डी. अ पर्सन कैन सेफली ईट मोर अलास्कन पुलाव देन ब्लैक स्ट्राइप बास इन वन डे, ठीक है? अलास्कन पुलाव पे हम जाएंगे. आ, इसका वेट ये है, ठीक है, इसका मर्करी है एंड ब्लैक. देखो अब आप देख सकते हैं कि इसमें दिस परफेक्टली अलाइंस विद द पैसेज एंड द ग्राफिक. व्हाई? बिकॉज एक तो वेट किसका कम है, इसका कम है. मर्करी कंसंट्रेशन किसकी कम है, इसकी कम है. तो दिस goes in line with the passage इस सेंस में कि स्मॉलर फिश को कंज्यूम करना चाहिए. तो यस, स्मॉलर फिश मतलब वेट के हिसाब से स्मॉलर फिश हो गई. एंड ग्राफिक के हिसाब से भी दिस इज इन लाइन कि यस, स्मॉलर फिश इज हैविंग अ लोअर मर्करी कंसंट्रेशन, इसलिए इसका आंसर डी होगा. किसी को कोई कंफ्यूजन है इस क्वेश्चन में? ओके, ए रिपीट कर दो. ओके विशाल, देखो द फिश विद द लोएस्ट एवरेज वेट इज द सेफेस्ट टू ईट. ये हमने पैसेज में पढ़ा था ऊपर. यहाँ पर आई एम गोइंग टू मूव टू द पैसेज ताकि आप लोग को याद आ जाए. यहाँ पर लिखा हुआ है कि वी ट्राई टू ईट मोर ऑफ द लो मर्करी फिश एंड ईट लो मर्करी स्पीशीज टेंड टू बी स्मॉलर ओमनिवोरस फिशेस. तो यहाँ पे ना दो की टेकअवेज है. एक तो ये है कि हमें लो मर्करी कॉन्सेंट्रेटेड फिशेस यूज करनी है, फिश ओके. और एक हमें स्मॉलर फिश यूज करनी है. व्हाई? बिकॉज एक कॉमन सेंस का कॉन्सेप्ट है कि स्मॉलर फिश अल्टीमेटली हैव मर्करी लोअर मर्करी कंसंट्रेशन इन इट, ठीक है? तो अब ये हमारा आइडिया जो है ये डेवलप हो चुका है, सही है. अब द फिश विद द लोएस्ट एवरेज वेट इज द सेफेस्ट टू ईट. पैसेज में तो ये चीज कह रही है कि यस, स्मॉलर फिश हैव द लोएस्ट मर्करी कंसंट्रेशन. तो पैसेज के हिसाब से तो दिस ऑप्शन इज राइट. हाउएवर हमें ग्राफिक और पैसेज को साथ लेकर चलना है. तो अब यू गोइंग टू फाइंड द लोएस्ट एवरेज वेट किसका है यहाँ पर, किसका है? अटलांटिक की हेरिंग का, राइट विशाल? इसमें कोई कंफ्यूजन है कि ये क्यों है? और देखो अगर आप बोलोगे कि ये क्यों है, ये क्यों नहीं है, तो देखो इसकी लोअर बाउंड्री 227 है बट इसकी अपर बाउंड्री 1000 है, ठीक है? तो दिस ये जो है ना, ये वाला, ये सही आंसर है, ठीक है? मतलब ये सबसे कम वेट वाला है. तो इसका 84 मर्करी कॉन्सेंट्रेशन है, लेकिन इससे कम और भी मर्करी कॉन्सेंट्रेशन है. तो दैट इज नॉट द राइट आंसर. सही है? डज दैट मेक सेंस नाउ? Perfect. Okay, now I'm going to give you guys 6 minutes, 5 minutes, because ये वाला passage बहुत easy है. अगर किसी का जल्दी हो रहा है तो एक दफा इसको skim कर लेना. I'm going to mute myself and give you guys 5 minutes. Easier लगा होगा last वाले से, right? Last वाले से easier लगा होगा. So we're going to move on to question number 1 now. ठीक है? Okay, according to the passage, Gregor initially believes his transformation is a, okay, so I want Nisha to answer this. What do you think is the correct answer? C. Perfect. ये तो बहुत easy question, ठीक है? Why do we think कि C इसका आंसर है? We're going to go back to the passage and एक दफा we're going to see why, because उसने यहाँ पर बहुत बार बोला हुआ है कि यहाँ पर it says कि what happened to me, he thought it wasn't a dream, ठीक है? The bedding was able to, यहाँ पे कहीं, या सो इट वाज इन अ ड्रीम. तो वो उसको क्या लगा था शुरू में, इनिशियली ही थॉट कि इट इज अ ड्रीम, इट इज अ नाइटमेयर, ठीक है? ये एक नाइटमेयर था, इसीलिए इसका आंसर जो है इट्स गोइंग टू बी सी, ठीक है? एज यूजुअल इन लाइन 9 प्रॉपर मोस्ट नियरली मींस, ओके, आई वांट संध्या टू आंसर दिस. संध्या, I want you to answer this. Question number 2. Line 9, I'm going to go to here. Proper here, the word. And these are your options.
Nandi, are you there? Okay, I guess it's B. Okay, anyone else? D. Okay, D, perfect. ठीक है. अच्छा सानिया देखो, okay, we're going to go यहाँ पे we're going to read the passage again, ठीक है? The line again. His room, a proper human room, although a little too small. ठीक है? यहाँ पे पढ़ते के साथ ही हमें ये proper का मतलब लग रहा है normal. ठीक है? Let me zoom in. या यहाँ पे ये पढ़ के हमें समझ आ रहा है कि प्रॉपर का मतलब है नॉर्मल, समथिंग दैट इज कंसिडर्ड appropriate, सही है. तो अब when you move this, why did you think it was B? मतलब why did you think the room was showing politeness? मतलब did you misread the question or did you just answer it क्योंकि मैंने पूछा था? क्योंकि D is the correct answer. Yes. A and C इसलिए नहीं है because रूम को हम कन्वेंशंस के बारे में बात नहीं कर रहे हैं. ठीक है. और उसके बाद जो है बी इसलिए सही है बिकॉज रूम कैन नॉट शो पोलाइटनेस. ठीक है. सी इसलिए नहीं है क्योंकि पेक्यूलियर का मतलब होता है समथिंग दैट इज अ लिटिल अनयूजुअल, अ लिटिल स्ट्रेंज. ठीक है. लेकिन यहाँ पे प्रॉपर की बात नॉर्मल में, सो इट्स इसलिए द आंसर इज गोइंग टू बी डी. ठीक है. इज एवरीवन क्लियर ऑन दैट? ठीक है. द नेक्स्ट क्वेश्चन आई वांट Savira to answer. C. Okay. Is there anyone else? Just go और आंसर लग रहा है. A. Okay. C. A. C. A. C. Okay. Everyone. मैंने लास्ट क्लास में बताया था don't क्या कहते हैं decide for two answers because that's going to hurt your decisiveness की power ना. तो आप एक ही choose करो even if it's wrong but try to settle on one answer. ठीक है. Okay. There is confusion between A and C. Is there anyone else जिसको B या D लग रहा है? ठीक है. कोई है जिसको B या D लग रहा है? Okay. Shabir said B. Okay. What does resentful, देखो हमने जब ऊपर एटीट्यूड पढ़ा था तो हमें क्या समझ आ रहा था कि he was a little, what did we get from the passage? He was a little jealous of his co-workers. ठीक है. ठीक है. Jealous of his co-workers, irritated, perfect. He was what do you call that? He was resentful ही कहते हैं बल्कि resentful means कि he was resenting means that you are mostly irritated कि किसी और के पास कुछ है जो आपके पास नहीं है, या you are bit jealous कि उनको इतना काम नहीं मिल रहा है मुझे इतना काम मिल रहा है. ठीक है. तो correct answer is yes, A. Now what does why is B, C and D not the correct answer? Because Shabir ने बोला था ना B. Okay, so B is not the correct answer because diligent का मतलब होता है caring or being very conscious about one's duties or works. But मतलब इस passage में it's quite the opposite. Gregor was not caring, yeah, he did not want to do his job. As Laiba said, he was very tired of it. इसलिए इसका आंसर diligent is something जैसे मैं कहूँ कि शबीर has solved the paper diligently. उसने बहुत carefully किया, he knew his job and उससे बहुत interest के साथ किया. But that is not the case है. ठीक है. इसलिए इसका आंसर भी नहीं हो सकता. इसका आंसर सी. देखो we know कि he is irritated, but irritated does not mean depressed. ठीक है. तो depressed is something of an accelerated feeling. He is resentful, he is upset, he is sad, sure, but we don't know if he's depressed or not. Depressed, Actually, I want you guys to know that depression and sadness are completely opposite. Sometimes हम ऐसे कह रहे थे कि I'm depressed, but you have to understand that depression is a proper mental illness. You cannot just go about saying कि depression हो रहा है मुझे, because I know all of us say कि depression हो रहा है मुझे. But because ये topic अगर आया है तो depression is something जो इतनी light नहीं होती, and hence ये passage में डिप्रेशन का कहीं हिंट नहीं दिया हुआ, सैडनेस का दिया हुआ, इरिटेशन का दिया हुआ. ठीक है. सी विल नॉट द करेक्ट आंसर. ही इज ईगर टू प्लीज. हमें मतलब उसने कहीं भी नहीं बोला कि आई वांट टू प्लीज माय बॉस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कुछ भी ये बात नहीं की थी. तो डी विल नॉट द करेक्ट आंसर. 4 को हम स्किप करेंगे. ओके. 14 to 15. अच्छा शबीर, फॉर योर सेक ऑफ क्यूरियोसिटी इसका आंसर है बी. तो यूर इसका आंसर यस बी है. तो नहीं, इसका आंसर सी है. आई एम सॉरी, इसका आंसर सी है. 4 का सी है. So you're wrong about this one, but you don't have to do this. Okay. Oh, I'm so sorry. I'm getting confused between you two. Shakil, yes. Shakil, इसका आंसर B नहीं है, इसका आंसर C है. But you guys don't have to do this question. ठीक है. Okay, so we're going to move on to question number 5 now. What central idea does the excerpt communicate through Gregor's experience?
Sony to answer this. Sonia, are you there? B. Okay. Okay. Is there anyone else? A, C, D. Okay. The correct answer is D. ठीक है, great. अच्छा, also I want you guys कि if you can, मतलब जब आप लोगों ने क्वेश्चंस पढ़े थे, आप लोग को जो आंसर्स लग रहे थे, अभी तो आप लोग बहुत ऑन द स्पॉट करो, लेकिन व्हेन यू गाइस सॉल्व पैसेजेस एट होम, आई वांट यू गाइस टू नोट योर स्कोर्स, ठीक है? बिकॉज व्हेन यू, मतलब मैंने आप लोगों को बहुत सारी टैक्टिक्स वगैरह बताई हैं, सही है? माय प्लान है कि मैं ऑलमोस्ट हर क्लास में के स्टार्ट में आप लोगों के साथ एक पैसेज करूं, जैसे मैंने आज आप लोगों को रीड करने के लिए दिया था, वैसे मैं एक रीड करने के लिए दूंगी, एंड आई एम गोइंग टू जस्ट गो थ्रू इट 10 मिनट्स में. तो आई वांट यू गाइस टू मार्क योर आंसर्स कि आप लोगों के कितने सही में कितने गलत है. तो दैट्स गोइंग टू हेल्प यू अंडरस्टैंड कि आप लोगों की इंप्रूवमेंट हो रही है, या आर यू गाइस स्टक ऑन द सेम स्कोर दैट यू वर इन द बिगिनिंग. ठीक है, दैट्स गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट. ठीक है, सही है. तो इसका करेक्ट आंसर डी है, बट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन